Good evening, kids. We are going to discuss the 22nd January shift to evening shift, 22nd January evening shift. Paper, it's like a, you can say like a easy paper. यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर आना है बोले तो देन करीब करीब आपको तो 99% के परसेंटाइल के लिए इन फिजिक्स में so if you can you have to get around 60-65 marks that'll be sufficient and paper is relatively very easy compared to the shift one so we'll यहाँ पे हम पेपर डिस्कस करेंगे so बहुत सारे आपको मेथोलॉजी भी मिलेगा लेकिन बाकी शिफ्ट को आप क्या करना है Okay, good evening, बच्चों. We are going to discuss the JEE Mains 2025 22nd January evening shift वाला पेपर. मैं आपका श्रीधर सर फिजिक्स. Paper. You can say it's a. What about the paper? Level of paper. You can call it as easier. It'll come under easy section में आ जाएगा. And almost all topics यहाँ पे cover हो चुका है. Compared to January shift one, A shift one, this paper is easy. यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा आपको आप like if you want a better rank. So we'll discuss the paper. We'll get some as usual. I'll share other ideas also. First wala question is asking the work done by the force. The displacement of particle moving under action of force. Find the value of B if the work done by the force is 0. So this particular chapter, name of the chapter, topical chapter name है work done. Work energy power concept के बारे में है. And work done equal to basic formula. Formula क्या है? Work done equal to F bar dot D bar. So 2I cap plus BJ cap plus K cap dot I cap J cap K cap. And net work done 0. यहाँ पे हमें information क्या मिला है कि like net work done will be 0. The net work done is telling it's a 0. हम work done यहाँ पे 0 substitute कर रहे हैं. No, it's a dot product. I dot I तो वो 1. I dot I will be 1. So then applying this 2 plus B बाद में J dot like I dot I 1. So 2I cap dot I cap will be 2. Then बाद में I dot J 0, I dot K will be 0. Then J dot I will be 0. J dot J will be 1. So यहाँ पे हमें B मिलेगा. J dot K will be 0. J dot K will be 0. Then K dot I 0. K dot J will be 0. अब बच्चे क्या हुआ लगे K dot K ये तो हुआ 1. तो B का वैल्यू कितना हुआ ना लगे 0 equal to 3 plus B equal to -3. ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछ चुके हैं. The name of the chapter is work power energy. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. सिंपल लगे आपको ये याद रखना पड़ेगा. वर्क डन इक्वल टू F bar dot D bar. एंड डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत आपको वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स में भी पता है. सो यूज करो. सो द ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट देन यू कैन मैनेज दिस. अगला वाला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एसी सर्किट्स अल्टरनेटिंग करंट. यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम भी लिख दूंगा. इट बी इजी फॉर यू. जो जिसका शिफ्ट कल है सो इट बी इजी फॉर यू लाइक कौन से लगे चैप्टर से क्या क्या पूछ रहे क्या क्या बचा है और क्या क्या पूछ सकते हैं. इट बी आपको एसएसएट में इजी हो जाएगा. इन सीरीज एलसीआर सर्क्यूट let me read question. In series LCR, the maximum amplitude of current is I naught when resistance is R. So सर्क्यूट इस तरह का होता है. A resistance, this inductance, a capacitance, AC सोर्स हुआ. जब रेजिस्टेंस R है देन एट रेजोनेंस करंट कितना फ्लो हो रहा है आई नॉट. यहाँ पे हम VRMS अप्लाई कर चुके हैं. If the resistor is replaced by, so we will इसको हम रिप्लेस करेंगे. अगर इसको हम R/2 रिप्लेस करेंगे इसमें करंट कितना होगा
अब आपको तो यहाँ पे एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज आई नो व्हाट मीन बाय जो लाइक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस में पूछ रहा है एट रेजोनेंस ओनली हम एक जो सवाल है at resonance current depends on what factor only on the r तो therefore I not equal to यहाँ पे हम vrms by r रखेंगे again at resonance I equal to vrms by r by 2 तो इसका कितना हुआ 2 vrms by r so 2 I naught this will be our current चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है ओके फाइन अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास हैं आपको याद रखना पड़ेगा छह सात फॉर्मूलास हैं अगर वो सभी एंड सीरीज रेजोनेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक बार रिवाइज कर लो बाकी बाकी जो भी बचे हुए शिफ्ट को जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे सो प्लीज रिवाइज अल्टरनेटिंग करंट ऑन ऑल द टाइम वन क्वेश्चन इज कमिंग अगला क्वेश्चन ले लेंगे दिस द टॉपिक बिलोंग्स टू द वेव ऑप्टिक्स एंड इंटरफेरेंस और YDAC वेरी पॉपुलर तो क्वेश्चन क्या पे यहाँ पे है like a fringe width of red light is more than the fringe width of violet light. Fringe width is directly proportional to wavelength of light used. तो यहाँ पे हम what is the fringe width का formula lambda d by small d. This is a basic formula है YDAC का fringe width. तो what is YDAC यहाँ पे S1 S2 slits यहाँ पे light is incident of wavelength lambda. सर व्हाट इज अ स्मॉल डी जो मैं स्मॉल डी लिख रहा हूँ so this is the small d a हुआ this is capital D a वाला हुआ this line screen and these are called as a slits then जो fringe width the pattern यहाँ पे हमें आता है so थोड़ा थिन कर लेता हूँ यहाँ पे लेके these are the fringes what is the one fringe width बोले तो one dark and one bright band this is called like a fringe width fringe width it depends on this quantity wavelength of incident light ये जो light incident हो रहा है slit के ऊपर and it also depends upon the distance d and the separation between the slit and the screen and also distance between the slits इसको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दिस वेरी इंपॉर्टेंट YDAC में भी कुछ फॉर्मूलास है याद रख लो इट बी वेरी इजी व्हाट अबाउट द वेवलेंथ वेवलेंथ तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रहेगा बिबग्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इन इस फॉर्मूला से हम लाइक वी कैन ट्रेस द वेवलेंथ एंड बिबग्योर ऐसे लिख दो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज रहे तो टेक हेल्प ऑफ दिस बिबग्योर मेथड लैम्डा v लेस देन लैम्डा i लेस देन लैम्डा b लैम्डा g लैम्डा y लैम्डा o लैम्डा r fringe width of red light so what is the information यहाँ पे wavelength of red and violet red का wavelength है violet है so fringe width of violet equal to lambda v by capital D fringe width of red is equal to lambda r by capital D by D तो जिसका wavelength ज्यादा है then and what is the information lambda v less than lambda r इसे हम क्या like what is the conclusion we can make it is WV will be less than WR or fringe width of red will be more than that of violet. Okay, this is a correct statement. Fringe width is directly proportional to wavelength of light used. W will be directly proportional to lambda. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 and statement 2. आया था यहाँ पे तो statement okay option B ले लेंगे. This is our correct statement.
paper manageable. It's very like only somehow if you remember all the basic concepts and formulas, it'll be easier. बाकी आपको लाइक बच्चे जो अभी शिफ्ट अगला शिफ्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वन वेरी सिंपल, यू हैव टाइम, जस्ट जाके पढ़ लो, नथिंग इज देयर, लाइक जितना होता है उतना कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पढ़ के थोड़ा फॉर्मूला से याद रख लो, यू कैन मैनेज, डोंट मिस दिस जेई मेंस। जितना होता है शिफ्ट वन लाइक जेई मेंस जनवरी का प्रिपेयर करो, देन यू हैव द फरवरी मार्च, ये 2 महीने में लाइक रिवाइज एज मेनी एज टाइम्स पॉसिबल ना, सो भी याद रह जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो देन ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज भी आपको समझ में आ जाएगा। देन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को यू कैन डू वेरी इजीली, देयर नो नीड टू इवन वॉच माय यूट्यूब चैनल आल्सो। जस्ट आपका टीचर नोट्स जो भी आप जब पढ़ चुके उसको ओपन करो, स्टार्ट रीडिंग, इट्स वेरी इजी, प्लीज डू लिसन, इट्स लाइक ए यू कैन सेव योर जे मीन्स। आपको ये बहुत लाइक ए वेरी यूजफुल लाइक ए टाइम इज देयर, प्लीज यूटिलाइज इट। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें 2 वायर है, करंट 5 एम्पियर, इसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम वायर 1, इसको वायर 2 दे देंगे। यहाँ पे you have to calculate the net field, magnetic field at point 2. Due to wire 1, यहाँ पे field will be into the plane B1. Due to wire 2, it will be out of the plane. Then what is the magnetic field due to long wire? The net field at O will be B1 minus B2. Magnitude ही पूछ रहे हैं, so this will be mu naught current I1, इसको हम I1 करेंगे, A वाला I2 will be 2 पाई, कितना हुआ ये तो 10 सेंटीमीटर, माइनस म्यू नॉट I2 2 पाई, ए वाज 4 सेंटीमीटर, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करेंट 5 एम्पियर, 2 पाई 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करेंट 4, 2 पाई 0.04, यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई विल गेट कैंसिल आउट, 4 पाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ विल टेक आउटसाइड, बाकी यहाँ पे 50 माइनस 100, 100 into 10⁻⁻⁷, so 10⁻⁻5 टेस्ला, ये वाला हमारा आंसर है। ओके, सो दिस इज द क्वाइट सिंपल फॉर्मूला है ना, आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग इन एग्जाम, म्यू नॉट I by 2 पाई आर। ओके सर, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, बी बार ड्यू टू लॉन्ग वायर कॉन्सेप्ट, ये तो लॉन्ग वायर हुआ, टू इनफाइनाइट बोल चुके हैं ना, सो देन दिस द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। ओके दिस, सो आपको ये जो फॉर्मूलास याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग शीट, ये बाकी जो शिफ्ट लिख रहे हैं, अगले शिफ्ट लिख रहे हैं, प्लीज रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूलास। स्टेटमेंट 1, यहाँ पे पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम अर्थ to another planet having mass 4 times and radius double that the time period of pendulum is, यहाँ पे हम pendulum taken planet having mass 4 times, g का value it depends upon g(m)r square, so इसका mass कितना है 4 times that of earth and radius double that of earth,
इसका कितना हुआ, जी एम ई आर स्क्वायर. द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन सेम एज ऑन अर्थ. और ए प्लैनेट में, सो अर्थ का ऑन अर्थ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हुआ जी एम ई आर स्क्वायर. देन व्हाट इज ये दोनों देख लो आप लोग, दोनों इक्वल है ना. जीपी equal to G. The acceleration due to gravity on planet is equal to that on the Earth. The time period of pendulum only depends on the gravity of the planet. नहीं, आपको पता है like a time period. What is the expression for time period? It depends upon L and G. तो यहाँ पे statement 1 correct है. Statement 2 is false. Statement 1 is true. Statement 2 is false. It depends upon time period of pendulum, depends upon the length and also acceleration due to gravity. So what is the question? This is the SHM, simple harmonic motion. सब टॉपिक का नाम सिंपल पेंडुलम. A force F bar acts on, find the torque. ये तो rigid body mechanics. और इसको हम रोटेशनल डायनामिक्स. सब टॉपिक इज टॉर्क. टॉर्क के बारे में पूछ रहे हैं. टॉर्क like ये जो कीवर्ड्स है, टॉर्क, मोमेंटम, फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इससे आपको यू शुड ट्रेस आउट द नेम ऑफ चैप्टर है. और वो चैप्टर से सब टॉपिक से व्हाट आर द फॉर्मूलास. बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ. रोटेशन मैकेनिक्स में बेसिक स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम. इससे ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस तो नहीं पूछते ना. जो भी पूछते हैं स्मॉल फॉर्मूला बेस्टिंग. सो टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ. सो या तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट जरा अगर पता है तो लिटिल बिट इजियर. 2i cap minus 3j cap 7k cap cross I cap 2j cap minus 3k cap. इसका सिंप्लीफिकेशन I j k 2 minus 3 7 1 2 minus 3. टॉर्क इज अ वेक्टर. यहाँ पे हम कर लेंगे हाई कैप A1 9 9 minus 14 minus j cap minus 6 minus 7 plus k cap 4 minus of minus 3. 9 minus 14, so minus 5 I cap plus 13 j cap plus 7 k cap. तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 3. दिस इज टॉर्क. आपको ये मैट्रिसेस एक्सपेंशन मैथ्स में भी पढ़ चुके होंगे, वेक्टर अलजेब्रा. सो टेक हेल्प ऑफ देम. टॉर्क दिस अ फॉर्मूला. ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. वेरी वेरी एसेंशियल. बिना ये फॉर्मूले आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते. इसको फॉर्मूला जरूर याद रखना. देन this is a problem based on the kinetic theory of gases. CV molar specific heated constant volume. इसका फॉर्मूला कितना है? FR/2 फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटमिक. नॉन वाइब्रेटिंग डायटमिक गैस के लिए CV को FR/2. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 5. सो CP इक्वल टू CV प्लस R.
तो इसका वैल्यू हुआ 5r/2 प्लस r 7r/2. देन गामा CP/CV बोलते हैं हम. तो गामा 1 इक्वल टू 9, ये हुआ 7r/2 बाय 5r/2. 7/5. For vibrating diatomic gas के लिए CV का वैल्यू will be 7. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? Okay, for non-vibrating, degree of freedom will be 5. For vibrating, इसका degree of freedom will be 7. So CP का वैल्यू कितना हुआ? 7r/2 plus r will be 9r/2. इसका gamma 2 will be 9r/2 by 7r/2. 9/7. 9/7. इसका करेक्ट. Okay, this one gamma 7/5 will be greater, so gamma 1 will be greater than gamma 2. Vibrational, due to vibrations, extra 2 degree of freedom. Due to non-vibration, only diatomic. Diatomic will be due to 3 translational, 2 rotational, and 2 will be due to vibrations. Okay, fine. So यहाँ पे due to translational 3, due to rotational 2, due to vibration 2. अगर non-vibration means only 5. Due to vibration, total degree of freedom यहाँ पे 7 लेना है हमें. So that's what I did. यहाँ पे non-vibration के लिए 5 degree of freedom. Due to vibration extra 2 add करना है. So कुल मिला के वो 7 हो जाएगा. 7 degree of freedom. So this topic very important, KTG. Thermodynamics, KTG, and radiation. These are the thermal conduction, maximum possibility of asking, and calorimetry. Simple formulas. एक बार फिर से रिवाइज कर लो. Now this is about a logic gate. Logic gates, semiconductor physics. The problem is based on semiconductor physics. थोड़ा यार technical. Just wait. The topic is based on the logic gates, semiconductor physics. Topic, subtopic, logic gates. यहाँ पे हमें बहुत सारे गेट्स दिख रहे हैं. सो ए वाला हुआ एंड गेट, ए वाला हुआ एंड गेट, एंड दिस विल बी नॉट गेट. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लॉजिक सर्किट ऑफ टू गिवन, आइडेंटिफाई द गेट जी. गिवन आइडेंटिफाई, यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल मिला है. ये जो गेट है, दिस इज अननोन थिंग. इस गेट बारे में हम पता नहीं. सो जो भी गेट है, इट शुड सेटिस्फाई दिस ट्रूथ टेबल. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लाइक 0. अगर 0 आप दे देंगे यहाँ पे, ए हुआ 1, 1 and 0, this will be 0 because AND गेट है ना. देन यहाँ पे 0 हुआ 0, 0, this will become 1. So यहाँ पे भी 0, 0 and 0 अगर यहाँ पे है तो then this will be 0 and 0. यहाँ पे 1 हो रहा है, 0 and 0, this is becoming 1. Then it should be NAND gate. NAND gate will be of this kind, 0, 0. Output will be 1. और एक इनपुट से चेक कर लेंगे, और एक इनपुट से चेक कर लेंगे. 1, 1, 1, 1 भी है, तो और एक इनपुट से चेक कर लेंगे. अगर ए 1 हुआ तो दिस विल बिकम 0.
अगर ए 1 हुआ, यहाँ पे 1 1 ले लेंगे, ए was 0, 1 and 0 again will be 0, 1 and 0 will be 0, 0 0 अगर आए तो अगेन यहाँ पे 1 है, so I think it will satisfy the NAND gate. दो इनपुट और कौन सा, तो एक इनपुट चेक कर लो, इसको 1, इसको यहाँ पे 1, इसको 0 बना देंगे, then you can verify it. So it's definitely a NAND gate. ये जो गेट है, it will be NAND gate. Okay, like I'll write down one more input है ना, 1 1 1 यहाँ पे लगा है तो it will become 0, 0 यहाँ पे ले रहे हो बोले तो ये वाला हुआ 1 1 1, ये हुआ 1 1 and 0 हम ले चुके हैं, 1 and 0, 1 and 0, ये हुआ 0, 0 and 1, 0 and 1 again will be 0. So it was NAND gate. Very good question. Simple logic gates. Huh? Everyone should have done. Okay. So next question. This question is based on the EM waves. Displacement current के बारे में पूछ रहे हैं. What is the displacement current formula? Epsilon naught d phi, rate of change of flux. Flux. What is the electric flux? E into area. So यहाँ पे now this will become epsilon naught a dE by dt. So यहाँ पे ले लो that epsilon naught is constant and dE by dt will be constant. The electric field between the plates will remain constant. प्लेट का एरिया इतना है, इस एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहे हैं. The question is like this, if this circular area, the question actually the diagram इस तरह है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए है. यहाँ पे हमें एक रीजन दे चुके हैं, इस सर्कुलर रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना फ्लो हो रहा है. सो एंड वी नो फ्रॉम द कैपेसिटर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा हर जगह. तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, आईडी. यहाँ पे कितना पूछ रहे हैं, उस सर्कुलर रीजन येलो कलर सर्कुलर स्ट्रिप में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बाकी सब भी कांस्टेंट रहेगा. ई एफ नॉट कांस्टेंट. सो आईडी बाय ए शुड बी इक्वल टू आईडी बाय ए डैश. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए डैश. यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, आईडी. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना फ्लो हो रहा है, कैपिटल आईडी. then using this formula id is equal to id by a dash by a. Displacement current 6, a dash 3.2 by 16, 1.2 एम्पियर. थोड़ा बहुत अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो देन ओके फाइन, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते. डिस्प्लेसमेंट करंट ईएम वेव्स, थोड़ा बहुत फॉर्मूलास है, तीन चार फॉर्मूलास है, like energy density, energy density of EM wave in terms of the ERMS, BRMS, then energy in a certain region, then the speed of EM wave, then EM wave propagating in different medium, then displacement current. I think कुल मिला के 5 फॉर्मूलास हैं. अगर तुम
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, फॉर्मूला से एक बार रिवाइज कर लो नेक्स्ट कौन सा भी सेशन में, यू कैन मैनेज दिस वेरी इजीली. This question based on the wave optics. Wave optics interference in thin films. This is the topic based on the interference in thin films. This is the light incident. This is the incident light. पहले this is a glass slab. ये वाला this is the glass slab. ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर थिन कोटिंग कर चुके हैं, फिल्म कोटिंग. देन ए लाइट इज इंसिडेंट. देन ये जो लाइट है ना, इट शुड पास थ्रू इट, so that maximum green light of wavelength will pass through it, and okay, it will get some less reflection will be there. Then इसके लिए what should be the thickness? Then what is the condition for like a maximum for the light to pass through it? 2 mu t is equal to n lambda, or thickness equal to n lambda by 2 mu. Minimum thickness पूछ रहे, so minimum thickness means n should be equal to 1, so lambda by 2 mu. Lambda value 5000, 10 to the power of minus 10. 2 mu will be into 2. So this will be 5 by 4 into 10 to the power of minus 7. 1.25 into 10 to the power of minus 7, or 0.125 micrometer. Interference in thin films, very simple concept is there. अगर आपको concept याद रहे तो, for transmitting there's a condition of 2 mu t equal to n lambda for constructive interference. For transmitted light there's a formula. Interference in thin films, no? For interference due to reflected light and also transmitted light is there. So जो formulas आपको याद रखना पड़ेगा. In the RC circuit should find I current. यहाँ पे इस current को हम find out करना. यहाँ पे capacitor है. This is very important. Then what is at steady state we have to find out t equal to infinity. So concept belongs to RC circuit at t equal to infinity concept. Then जहाँ पे भी capacitor है, it will be open circuit. So current will only take path like this. Current का path, current कौन से branches में flow होता है, in these branches में flow होता है. जो ग्रीन कलर में दे रहा हूं, इसी ब्रांच में करंट फ्लो होता है. सर यहाँ पे करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? सो द ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट आता है, इट कैनॉट ब्रांच. ओके फाइन, इट नॉट पॉसिबल. और या तो दिस विल बी ओपन सर्क्यूट, और ओपन सर्क्यूट रेजिस्टर नॉट पॉसिबल. ओके फाइन. सो हम जो मैं ग्रीन कलर का पाथ दिखा रहा हूँ उसी पाथ में करंट फ्लो होता है. देन ये जो दो रेजिस्टर्स है, इसको करंट डिवाइड करेंगे हम. करंट डिवीजन में like a current I1, I2, यहाँ पे I3, I4, same current I4 flows. So I4 क्या हुआ? No, this will be in series. This two are series, that effective is in parallel. So इसका अगला सर्क्यूट सॉल्व करने पर इस तरह मिलेगा हमें. ये जो 0.1 2 3 5, so ये क्या हुआ? 1 2 1 2 3. सो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज है, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2R. ये हुआ R, ये हुआ R, दिस इज R, दिस इज R, एंड दिस इज V. R and 2R अगेन दे आर पैरेलल. हम सर्क्यूट यहाँ तक सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम.
1 3 4। अब ये दोनों पैरेलल है, इसका इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे। This will be 2R by 3. 1 3 4 5। 2R by 3, ये दोनों अब सीरीज में है। इसका इफेक्टिव रिप्लेसमेंट will be 5R by 3। बाकी बचे पॉइंट्स कितना है, 4 3। नो ये दो रेजिस्टर से यहाँ पे करंट ब्रांच हो रहा है, तो ये दो रेजिस्टर सब पैरेलल में है। इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस और दिस इज बी, इसका वैल्यू कितना हुआ, 5R by 8। तो अब ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में, इसका इफेक्टिव रिप्लेस करेंगे। तो इसका इफेक्टिव हुआ 13R by 8। तो करंट का वैल्यू कितना हुआ, V by 13R by 8, 8V by 13R। ये वाला ऑप्शन। तो सर कैपेसिटर को क्या करें हम, इट विल बी ओपन सर्क्यूट, बिकॉज एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर है, इट विल बी ओपन सर्क्यूट। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस ब्रांच में नो करंट। तो आप एक कंप्लीट सर्क्यूट यहाँ से निकाल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ नो, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। फील्ड is so there's a field, is so magnetic field है, ये जो सब है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ पे रिंग एंटर हो रहा है एंड इट विल कम आउट। देन अगर आपको हम यहाँ पे फ्लक्स के बारे में इक्वेशन दे देंगे, देन वी कैन इजिली ब्रिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक काम करेंगे, लेके दिस इज द this is the field, this particular thing। एक काम करेंगे, लेके स्मॉल डायग्राम ले लेता हूँ। जैसे डायग्राम यहाँ पे हम विल ड्रॉ द रिंग। लिटिल बिट गुड क्वेश्चन। फ्लक्स लिंकिंग, यहाँ पे दिस एवरीथिंग इज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे, पहले फ्लक्स लिंकिंग इन दिस ए और वाई, this distance will be r। ये तो मूविंग विथ a constant velocity है। देन एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इसका स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे।
This one will be the resistance. ये तो resistance R हुआ, and this will be how much? R minus X distance, because A हम ले रहे X नो. Then what is the area of this green color strip? This will become dA is equal to y into dx. y यहाँ पे हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर. And what is v? V हुआ dx by dt. फाइन. So हमें तो यहाँ से लेके वी शुड गेट सम मैथमेटिकल इक्वेशन. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये तो ऐसे इक्वेशंस तो नहीं आएंगे ना, हमें पता है. दिस इज रूल्ड आउट. ए वाला पॉसिबल है साइन, दिस ऑल्सो नॉट पॉसिबल. बाकी बचे. सो नाउ 193 में हम स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करेंगे. v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. हमें क्या लगे? y इक्वल टू यहाँ पे y शुड बी रिप्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ dx. So this will become equal to r square plus r minus x whole square into dx. This is dA. a हुआ r square कैंसिल हो जाएगा एक्सपेंशन में. x square minus 2rx into dx. Then flux linking d phi equal to b into dA. Magnetic field uniform है. Then x square minus 2rx into dx. This will differentiate d phi by dt. With respect to x, we have to differentiate. This will become थोड़ा a lengthy calculation होगा. We'll go for the effective length वाला. यहाँ से हम effective length concept use करेंगे. Effective length reduce. So effective length concept अगर आप apply करेंगे तो EMF equal to dV to y. यहाँ से हम effective length, complete ring का effective length concept use करेंगे. Then this will become BV to y will be y का वैल्यू हुआ, so a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So this will become y का वैल्यू will be x square minus 2rx. I think this will 2bv x square minus 2rx. और इसको हम differentiate करेंगे, we'll get same thing. I just giving a simpler method. यहाँ पे भी 2y है. The concept is same. And v ये हुआ EMF. This will represent equation of ellipse. अगर आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस ले लेंगे तो, so what is actually happens to the field? जैसे जैसे लूप एंटर होता है, इसका एरिया लिंकिंग will increase, will become maximum. जब its diameter is crossing this maximum, then again the area decreases. So what will happen to rate of change of flux? First it will increase, become maximum, then decreases. Then when loop is fully inside, flux remains constant. This is okay. हर एक ग्राफ में this gap is there. हर एक ग्राफ में gap तो है. So with this we can't identify. No, we can take help of this one. As the ring enters, you can see the area. Again it starts leaving. So therefore this is not possible to be maximum. Only these two are possible. Then this will represent some. If to pick up this one, it's a bit tough. ये वाला ग्राफ.
Okay, अगला question, the same thing. A proton is moving with uniform velocity of 2 into 10 to the power of 8 meter per second, uniform magnetic and electric field which are perpendicular. The electric field is switched off. The proton moves in circular path of radius. Then the magnetic field B, which are perpendicular to each other. Electric field is switched off, then proton moves in circular path. Then the magnetic field. So what is the formula now? इसका velocity दे चुके, radius and magnetic field बारे में पूछ रहे. So what is the formula? R equal to mb by qb. हमें radius पता है. Electric field is switched off, then proton moves in circular path of radius. Radius पता है. Then इसका speed पता है. And it's a proton. Magnetic field बारे में पूछ रहे हैं. So what is the formula? B equal to mv by qr. Mass of proton, velocity of mass of proton substitute करो qr. Then we'll get the required magnetic field. ये तो simple थोड़ा like you have to calculations for mass of proton and also data आपको. Okay, I'll check the data. Mass of proton will be 1.6 into 10 to the power of minus 27. Speed का value 2 into 10 to the power of 8. Charge of proton 1.6 into 10 to the power of minus 9. Radius कितना दिया है? 1.6 into 10 to the power of minus 5. तो solve करोगे तो will get this our answer. Sir, what about electric field? Yes, electric field बारे में information यहाँ पे दिया है, but what the thing is it's switched off. जब आप switch off करेंगे तो then only due to magnetic field the proton will move in a circular path. B bar and velocity of proton इस तरफ दे देंगे, so it will move in a circular path. ये वाला हुआ proton and it is moving in a circular path. Sir, what about electric field? Electric field यहाँ पे switched off हो चुका है ना, so it's no use for us. Then we will provide required centripetal force F equal to QVB, and that F equal to QVB will provide required centripetal force. इसको हम solve करने पर हमें ये formula मिलेगा. आपको यह formula याद रखना पड़ेगा. Moving charges in magnetic field. So the topic belongs to the moving charges and magnetism. And F equal to Q V bar cross basic formula. And subtopic R equal to like a charge particle moving in a circular path based on that. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Dimension formula of the capacitance. अगर आपको dimension formula of capacitance पूछ ले, what is the best thing is like what is a equation you can use? कौन सा equation use करना है? So you have many things. Time constant lambda equal to RC. अगर आपको इसके बारे में पता है, then because ampere भी है यहाँ पे, so definitely this is useful. Lambda A तो इसका dimensions हुआ T. Resistance का dimensions. Voltage R equal to V by I. Capacitance. So I काम करेंगे. I just things like this. Voltage के बारे में तो then again we'll go for the potential. Then work done is equal to Q into V. Charge into potential difference. Work done का dimensions पता है हमें. Force into distance. Charge का dimensions तो current is equal to charge by time. So this will be I into T. So voltage का कितना हो? Fs I T. Okay, agree this. So voltage यहाँ पे लगा देंगे हम. तो voltage का dimensions हुआ Fs I T into A वाला I and this is C. So Fsc by I square T. T means time. Lambda का भी time है, dimensions.
तो C का dimensions now I square T square force and this will be displacement XL right. Dimensions हुआ A square T square. फोर्स का डायमेंशंस क्या है? मास m1 L1 T minus 2. डिस्टेंस का डायमेंशंस L1. So A square T to the power of minus 4 M minus 1 L minus 2. So इसका फॉर्मूला M minus 1 L minus 2 T minus 4 A square. T to the power of 4 plus 4. ऑप्शन सी. अगर आप एक थोड़ा टाइम कांस्टेंट इज इजियर आपको. एनी अदर थिंग इज देयर q by v equal to q by c वो भी ले सकते हैं. वोल्टेज इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस. एनीथिंग आपके कन्वीनियंट. नो एक थोड़ा क्वेश्चन. एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेंस इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हम एक काम करेंगे. जो लेंस है लेंस इस तरह का लेंस दिस लेंस इसको हम पहले ऐसे कट करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? नो दिस इज एफ. दिस विल बिकम एफ डैश एफ डैश. इसका एफ डैश विल बिकम 2f. सर व्हाट इज द रीजन? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. इसका रेडियस सेम. पहले इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे. एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर. एफ इक्वल टू आर बाय 2 म्यू माइनस 1. देन व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 by r minus infinity. So f dash हुआ r by mu minus 1. So r by mu minus 1 what we can write? 2f. So when you cut the lens, this is the lens. If you cut this normal to the axis, what is the axis यहाँ पे? This axis. Huh? When you cut this lens normal to the axis, इसका focal length double हो जाएगा each part का. Then इसके बाद में क्या करेंगे हम? ये जो लेंस है ना कौन सा तो एक पार्ट ले लेंगे. इसको हम आधा करेंगे ना. ये आधा पार्ट यहाँ पे है एंड दूसरा आधा यहाँ पे है. नाउ इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसका फोकल लेंथ रिमेन सेम. द रीजन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इंफिनिटी. ए वाला हुआ आर इंफिनिटी. तो इसका फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होना चाहिए ना. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट? इसका अगर एफ रहे तो ईच पार्ट का एफ डैश एफ डैश एफ डैश एंड एफ डैश विल बी 2f. This based on ray optics. Ray optics, the topic chapter ray optics, lens maker formula. This is a question based on the equation of continuity, fluid dynamics, or fluids based on subtopic equation of continuity. A1, a V1, a V2, and यहाँ पे A2. So A1 V1 equal to A2 V2. A1 का वैल्यू कितना? पाई 2r होल स्क्वायर. V1 वैल्यू 2. A2 वैल्यू pi r square V2. V2 will be 4 meter per second. Simple. A1 V1 equal to A2 V2 equation of continuity.
यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है पाई 2r होल स्क्वायर, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर। आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। दिस इज वेरी रेयर, लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके फाइन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे हम करंट पास करते हैं इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है इट विल ब्रांच लाइक दिस, और बाकी बचे उसका करंट यहाँ से ब्रांच, फिर दोनों कंबाइन होके यहाँ से निकल जाता है। ओके फाइन, नाउ दूसरे पार्ट में भी द सेम थिंग, यहाँ जो करंट यहाँ से ब्रांच हुआ फर्दर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है इस रेजिस्टेंस में इस रेजिस्टेंस में इक्वली यहाँ पे, और दोनों कंबाइंड होके यहाँ से आ जाते हैं। देन नाउ यू कैन सी क्लियरली लाइक ये जो यहाँ पे हमें जंक्शन मिल रहा है ओ, इट इज नॉट ब्रांचिंग। देन इसका सर्किट अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा, इस तरह सिंप्लीफाई होगा। सो ये जो जंक्शन है इट्स अ डमी जंक्शन, मींस लाइक और व्हाट यू सेलेक्ट, इट्स जस्ट अ फिजिकल जंक्शन, it is not an electrical junction, so that's why the current यहाँ पे flow था, so it will not branch। so what is the path of current यहाँ से ऐसे पाथ हो जाता है, या कंबाइन होके फिर इस तरह यहाँ से पॉइंट बी से बाहर आ जाता है। so then यहाँ पे जो करंट एंटर हो रहा है this will again यहाँ पे it will branch, this will branch। current it will not branch like this। so resistors, so all these are resistors, कितना वैल्यू कितना है r r r r r and r। ये दोनों रेजिस्टर्स का वैल्यू कितना है 2r, 2r पैरेलल टू r। इसका इफेक्टिव कितना होगा r 3r। सो यहाँ पे r r r r r एंड r, ये जो मैं r डाल रहा हूँ दिस इज द इफेक्टिव ऑफ दिस वन, ये वो r। बाकी ये भी जो 4 रजिस्टर्स है इसका इफेक्टिव विल बी r। तो बाकी ये तीन तीन विल बी तीनों रजिस्टर्स लाइक r एंड ये 4 रजिस्टर एंड दिस r, ये सभी पैरेलल है। so like these two are series that effective in parallel, so series। यहाँ पे हम पॉइंट ही यहाँ पे रखे, then total resistance will be 3r 3r, effective resistance RAB will be 3r by 2, so n का वैल्यू हुआ 3। based on current LCT। basic projectile kinematics, 2D kinematics, projectile motion। we have projected a projectile with a speed u at an angle 60 degree, 20 meter speed at highest point। इसका स्पीड पूछ रहे हैं, the speed of at highest point of trajectory, इसका तो u cos theta हुआ 20 into cos 60, so 20 into 1 by 2, 10 meter per second, 10 will be our answer। a simple formula based। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल शोने व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस 2r, EMB के बारे में पूछ रहे हैं। नो डाइपोल, सो दिस इज डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल है।
बड़ा वाला डाइपोल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल कितना, ई नॉट मी नॉट, तो ई नॉट का वैल्यू, व्हाट इज ई नॉट ऑन द एक्सिस, विल बी 2kp by r cube. This is on axis, on the bisector, का कितना वैल्यू, kp by r cube, बट यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 2r, so kp by r cube into this is 1/8, kp r cube कितना वैल्यू विल बी e naught by 2/8, तो कुल मिला के दिस विल बिकम 16 on the bisector, this is on bisector. Similarly पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल विल बी kp by r square, this is on the axis. On the bisector इसका तो वैल्यू will be 0 होगा, because this everything is equipotential, so options E naught by 16. यहाँ तो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल हर जगह यहाँ पे, इफ यू ड्रॉ दिस लाइन एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस बाइसेक्टर, पोटेंशियल इज जीरो फॉर डाइपोल. द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाइपोल. Now, light of wavelength is incident on a metal of work function, the maximum kinetic energy. यहाँ पे हमें एक मेटल है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इसका वर्क फंक्शन कितना है मेटल का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एजेक्टेड दे आर हैविंग kinetic energy k1. So what is k1 equal to sc by lambda minus work function. Now E like, अब इसमें क्या करेंगे, वेवलेंथ, वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाई 2, इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा बाई 2 बन गए तो देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, sc by lambda by 2 minus work function, so 2 sc by lambda minus work function. इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इसका k1 का वैल्यू कितना है, 2e, हम यहाँ से sc का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट sc by lambda, वर्क फंक्शन कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो sc by lambda का वैल्यू कुल हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so k2 equal to 2 3 electron volt, work function this is 1 electron volt, 5 electron volt. इवन अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना याद नहीं रहे तो भी, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो यू कैन मैनेज. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, exam is all about getting marks, nothing to do with your, no need to show your talent, it's all about no need to show, just you want marks, somehow you have to get marks, no. So prepare yourself for exam in all sense, the target is right to get a marks, knowledge should be there, formula should be there, tricks should be there, but you should really bring all those things. जो भी हम सोचते हैं मार्क्स के लिए सोचना पड़ेगा हमें. अगला क्वेश्चन ले लेंगे, द मैक्सिमम परसेंटेज आर इन द डेंसिटी ऑफ ए वायर, so density equal to mass by volume, volume will be pi r square l, d rho by rho equal to dm by m, then 2 dr by r dl by l. इसका सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास का 0.003 by 0.6, 2 dr रेडियस 0.01 by 0.5, dl 0.05 by 10.
percentage error, we'll multiply all these values with the percentage error, then we'll get some basic formula. Calculations will be 5%. Please work out. Answer 5% आ जाएगा. Okay, fine. This based on the errors general physics. Error concept. यहाँ पे topic name भूल गया था मैं. So this is the matter and radiation. Subtopic photoelectric effect. No. Ball of mass attains when drop. If the density of ball is twice the density of liquid, viscous force on the ball when it attains terminal velocity. यहाँ पे ball है, so यहाँ पे bind force, viscous force mg. The density of liquid is twice the density of the ball. Find the terminal velocity. इसके पूछ रहे हैं. So what is the terminal velocity formula? In terms of mg. There's one more thing. तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे. Fb plus b equal to mg. Bind force will be rho L, volume V naught G. Viscous force कितना? Viscous force on the ball when it attains terminal. Is asking only viscous force. Density of the ball will be two times of it. So then sigma V naught G. What is the mass of the ball? Sigma V naught. So this will become 2mg plus F equal to mg. Maybe it is moving up. I got negative viscous force. Okay, it will be downward. Okay, then this will be your answer. Concept based on the viscosity and Stokes law. Calculate the radius of helium ion in the first excited state. R equal to n square A naught by Z. And this is a typical formula in the first excited state. First excited state means if this is the helium, it will have the ground state. Next, it will have the excitation. So this is the electron यहाँ पे है. A वाला हुआ nucleus. This is the electron. Now its energy is asking. So what is n equal to 2 square? A naught value will be 0.53 Armstrongs. Helium ka value Z equal to 2. 1.028. 2 into 0.1.06. This will be your answer. Formula. Radius of the electron in nth Bohr orbit. A formula आपको याद रखना पड़ेगा. Speed, energy, radius, angular momentum, time period, magnetic field. ये सब formula से अगर formula से याद रहे तो okay, you can manage this very easily. Otherwise ये हम derive नहीं कर सकते, very lengthy. Atomic physics. Even myself 2 minutes I can't derive. अगला question ले लेंगे. Not getting synced. A massless tube 1 meter is filled with a liquid of mass 2m. About passing through is 1n, and with angular storm, force exerted by liquid on the other end of the tube is.
यहाँ पे ट्यूब है, about one end it is rotating, it is spinning. Let me draw the diagram. Yeah, here it's rotating. And every time if force exerted by liquid on the other end of the tube. Yeah, यहाँ पे liquid है. So this everything is liquid. What is the mass of liquid? 2m. Is asking the force exerted by this liquid at other end. This is the force. We have to calculate force on this. Here what happens? The pressure will be maximum here. The reason for that, the complete pseudo force which is acting here, mass 2m omega square, at what distance it will be? L by 2. Then the liquid what happen will, the pseudo force will press it. So if you take the complete liquid column, this will be PA and this is pseudo force. So force will be this PA should be equal to 2m omega square L by 2. Force exert liquid on the other end. So it's asking directly this force only. So 2m omega square L by 2. So omega bar में पूछ रहा है. So this will be omega will be F by ml. Length of the tube is 1 meter. So we'll get answer 1. So this is based on the fluid statics. Little bit tough question. So यहाँ पे आप देख चुके हो like 24 questions यहाँ पे मैं okay, the paper analysis in the 24 questions, around 4 are tough and around 12 are very easy and 8 are moderate. I think this is our typical JEE means question. So the paper analysis will be out of 25 questions, 4 are tough, 12 are easy. बाकी बचे से कितना 69, 9 are moderate. So for 99 percentile, if you can score around 65 marks for physics, I think manageable. Okay, all the best students for the 23rd. There's a 22 shift, no? For 23rd, what we are having, it's all the best. Then 23rd, like I'll upload the paper since I'm working in college, so I have to be only evening I'll get a time. So maximum I'll try my level best to upload the 23 paper. Will expect it to be little bit, let it be easy. I'm not the paper setter. I'm praying that okay, let the paper be easy and like all the best for 23rd shift people and 24th shift also. Thank you all of you. Okay, बच्चों आज लाइक 22 जनवरी शिफ्ट पेपर डिस्कस कर चुके थे. तो आपको पता है लाइक एज ए टीचर सब माय एक्सपीरियंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ. बाकी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे हमको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो इवन मुझे भी डिराइव करना पड़ता है. तो जस्ट आप अपने आप सोच लीजिए लाइक आप एग्जाम लिख रहे, आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपको उसके पता है, आप समझ चुके, फिर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते. द क्वेश्चन यू हैव टू लिव इट. यहाँ वहां पे आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते. तो यहाँ पे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंस, हर एक क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए. फॉर्मूला याद रहने के लिए क्या क्या कर सकते तुम, यू हैव टू रीड, मेमोराइज. दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंस एग्जाम. अब आप एडवांस में चले जाओ, वहां पे भी 70% ऑफ पेपर बिना फॉर्मूले आप यू कैन नॉट सॉल्व. ऑफ कोर्स एडवांस के लिए क्या, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूला और थिंकिंग एबिलिटी.
द आइडिया ग्रास्पिंग मीन्स के लिए छोटा सा आइडिया चाहिए, आप इतना बड़ा बड़ा थिंकिंग नहीं चाहिए, छोटा सा आइडिया. So concept clarity, formula, then high speed calculations, then small ideas. तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस में अराउंड 4 क्वेश्चंस आर रियली टफ. थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. ओके, लीव दैट 4 क्वेश्चंस. देन बाकी 20 क्वेश्चंस आर रीचेबल. और 20 क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो अराउंड 18 क्वेश्चंस यू नीड फॉर्मूला. तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट. आप जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, यू रिजल्ट आना मुश्किल है. कुछ भी कर लो तुम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, लाइक नॉट पॉसिबल ना. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा. सो जो आप पढ़ते हो वही कॉन्फिडेंस है. जो आप कॉन्फिडेंस है उसी से आपको मार्क्स मिलता है. दिस इज रूल, गोल्डन रूल ऑफ द अचीवमेंट. बाकी तुम 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल बिना पढ़े कुछ नहीं होता है. जैसे गोल्डन रूल. तो बिलीव इन योर सेल्फ, हार्ड वर्क, बिलीव इन हार्ड वर्क. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं होगा. बिना मेहनत करे नॉट पॉसिबल. जो बच्चे 2026 एस्पिरेंट्स है, स्टार्ट वर्किंग. आई एम नॉट आस्किंग डेली 20 आवर्स, एटलीस्ट 9 आवर्स, 6 आवर्स डेली. 6 घंटे पढ़ो या 7 घंटे पढ़ो या 5 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो यार, कुछ नहीं होता है. बिना पढ़े लास्ट एग्जाम 1 मंथ में उधर इधर, ये नॉट पॉसिबल. डोंट बिलीव इन एनीथिंग, जस्ट बिलीव इन हार्ड वर्क. जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, सिलेबस इतना ज्यादा है, लेकिन 2 साल, जो 2 साल में तुम नहीं पढ़ चुके हो, लाइक इज इट पॉसिबल? 10 days, 5 days, नॉट पॉसिबल. नो. सो बिलीव इन द रूल्स, नेचुरल रूल्स. लाइक जो मेहनत करता है उसी को सफलता आता है. नॉट पॉसिबल. सो आप take the reality of the papers, start solving. जो भी आप वो are planning for the April shift, you have a time. अभी 2-3 महीना है. Start reading. Okay, all the best kids for 23rd and 24th shift. Okay, tomorrow we'll discuss the 23rd and morning and evening shift papers. Thank you all of you. Thank you.